My question is regarding your most important advice. Before goal realization, one should try to exit the market before 3 years, 3 years before goal realization. What if I have not attached my investment to any goals for now? My age is 28. I would love to hear your thoughts on this. Thanks a lot for doing satsang and helping us on our journey. So, Himanshu ji, so thanks a lot for your appreciation. So, what if I have not attached my investment to any goals for now? So, I understand कि अगर आपने कोई गोल को अपना इन्वेस्टमेंट्स को अटैच नहीं किया है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग दैट? उसके पीछे का रीजन क्या है कि भाई किसी गोल को जब हम अटैच करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को, तो हमें यह पता चल जाता है कि इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है. और एक बार हमारे पास इन्वेस्टमेंट होराइजन समझ में आ गया, सो देन टू चूज अप्रोप्रिएट एसेट क्लास और अ सब एसेट क्लास. मतलब अगर अपना गोल 3 साल पहले के 3 साल से कम का है, तो देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग इनटू इक्विटी एज एन एसेट क्लास. अगर हमारा गोल 3 साल के ऊपर का है, 3, 5, 7, 10 साल का, then we can go for equity as an asset class, combination of equity and debt. और अगर 10 साल के ऊपर का है तो थोड़ा सा एग्रेसिव पोर्टफोलियो प्रोफाइल है अपना, so then you can go for even small and mid caps also. So that is the idea of attaching your financial goals to your investments, nothing else. So इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं वो. सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि भाई गोल क्या है. सो गोल क्या है, यानी कि इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना लंबा है हमारा. सो दैट्स द आइडिया. तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे जाना चाहिए.